Assalamu alaikum. But in this video lecture, I will start delivering the infections of the CNS, right? Another very important topic, infections of the CNS. Obviously, once there is infection in the CNS, it damages your nervous system, it damages the neurons and the supporting glial cells, right? The causative agent, the infection directly can kill these cells, or it can kill these cells by releasing the microbial toxins, right? It is as easy as possible. So neurons and the glial cells are damaged. How the microorganisms reach to your CNS and can cause infection? The most common route of entry is the hematogenous route, that if you develop infection somewhere else in the body, and from that site of the infection the microorganism enters into the blood, and through the blood it comes to the CNS. It is the most common. Number two is the direct implantation of the microorganism into the CNS, into the brain spinal cord. For example, during trauma, इतना कोई सीवियर ट्रॉमा हो जिसकी वजह से जो स्कल बोन्स है वो फ्रैक्चर हो जाएं और फिर वहाँ बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला जाए. And the conditions like the congenital malformation like meningomyelocele is a condition in which your CNS is actually exposed to the microorganisms in the environment, right? Direct implantation के अलावा local extension from the adjacent structures, right? I mean to say, if you have infection in any part of the body near the brain spinal cord, तो वो लोकली एक्सटेंड हो, ब्लड वेजल्स के थ्रू नहीं, लोकली. जैसे कि एयर साइनस है, जैसे कि फ्रंटल साइनसाइटिस, तो फ्रंटल साइनसाइटिस का, मैक्सिलरी साइनसाइटिस, ये ब्रेन के बहुत करीब है ना बेटा. तो साइनसाइटिस अगर किसी पेशेंट को होती है तो इन्फेक्शन जो है बगैर ब्लड वेजल्स के लोकली एक्सटेंड कर जाता है और ब्रेन को इन्वॉल्व करता है. एयर साइनस के अलावा टीथ हो गए, स्कल, वर्टिब्रा का फ्रैक्चर, बोन्स का जो फ्रैक्चर हो, सॉरी इन्फेक्शन हो गया, तो या जैसे कि ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया, सो द इन्फेक्शन कैन डायरेक्टली एक्सटेंड, राइट. उसके अलावा अलोंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन बाय द रेबीज़, बाय हर्पीस ज़ोस्टर वायरस. आपको पता है ना बेटा, इफ दिस इज़ योर हैंड, राइट, एंड हेयर अगर कोई हेयर यहाँ पे कोई अगर डॉग बाइट करता है तो डॉग बाइट की वजह से जो टॉक्सिन यहाँ पे रिलीज होता है वो पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन में जाता है, सही है ना. ये असेंड होता है इन्फेक्शन, पेरिफेरल नर्व्स होती हैं जो कि इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखें ना यहाँ पे जो टॉक्सिन आता है वो पेरिफेरल नर्व से ऊपर असेंड होकर ब्रेन में जाता है, ऐसे होता है ना. तो ये चौथा पॉसिबल रूट है जिससे इन्फेक्शन जो है वो आपके सीएनएस में पहुंच सकता है. नंबर वन, द मोस्ट कॉमन वाज द हेमाटोजिनस, ब्लड वेजल्स के थ्रू. डायरेक्ट इम्प्लांटेशन, एक्सटेंशन ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, उसके अलावा अलॉन्ग द पेरिफेरल नर्व्स. ठीक है बेटा, इस तरीके से ये तो रूट्स ऑफ एंट्री हो गए. इन्फेक्शंस कैन बी बेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कैन बी वायरल इन्फेक्शंस एंड अदर्स. The possible bacterial infections, very important bacterial infection of the CNS is the meningitis. It can be the acute meningitis, acute pyogenic meningitis, or the chronic meningitis. Similarly, viruses can also cause the meningitis, right? And the localized infections of the bacteria include the formation of the abscess, that is the localized, and the formation of empyema in the meningeal spaces, right? We'll talk about all this in detail. Viruses can cause encephalitis other than meningitis, right? Encephalitis, इसकी भी varieties discuss करेंगे. It may be the arthropod-borne encephalitis, or it may be the encephalitic syndrome. The viruses can cause the brainstem and the spinal cord syndromes like the rhombencephalitis, spinal poliomyelitis. So this is what can happen, beta. So you remember now you understand, beta, the four routes of entry to the brain, to the spinal cord, blood के थ्रू, पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू, लोकली, या फिर डायरेक्ट इम्प्लांटेशन. बैक्टीरिया कैन बी द कल्प्रिट्स, viruses can be the culprits. Both can cause meningitis. Bacteria can cause localized infections. However, the viruses can cause encephalitis, brainstem, spinal cord syndromes. ठीक है.
अब जो हम बेटा डिस्कस करने लगे वो है अक्यूट मेनिंजाइटिस, राइट। पहले डिस्कस करेंगे अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फिर डिस्कस करेंगे अक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस, ठीक है। अक्यूट मेनिंजाइटिस इज द टॉपिक, acute meningitis by the bacteria, acute meningitis by the virus at number 2. So बेटा the acute meningitis पहले जनरली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जनरली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट एक्चुअली इज द acute meningitis, फिर बैक्टीरिया और वायरस के परस्पेक्टिव से देखेंगे। द acute meningitis in general, it is an inflammatory process of the leptomeninges, inflammation of the meninges. It is not good to say the inflammation of meninges, rather you say inflammation of leptomeninges, that are the inner two layers of the meninges. ड्यूरा मेटर सबसे बाहर वाली होती है, उसको छोड़ के जो अंदर की दो होती हैं, एरेक्नॉइड मेटर एंड द पिया मेटर, उसका इन्फेक्शन होता है, एंड द CSF within the subarachnoid space. So the best definition of the acute meningitis is the acute onset inflammation of leptomeninges and the CSF present within the subarachnoid space, right? Okay. The most common cause of acute meningitis is the infection. इन्फेक्शन में भी सबसे कॉमन बैक्टीरिया और उसके बाद वायरल इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस के बेटा एक्यूट मेनिंजाइटिस के इन्फेक्शन के अलावा भी कॉजेज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बैक्टीरिया और वायरस जाके अटैक करे। लेस ऑफन इट इज सीन दैट acute meningitis may be due to the non-bacterial irritant like the any chemical, and in that case it is said to be the chemical meningitis, right beta? So now you have the general overview that what is the acute meningitis, leptomeninges, CSF का इन्फेक्शन, ओके। मोस्ट कॉमनली तो इन्फेक्शन ही होता है बेटा, इसके पीछे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन लाजमी नहीं है। लेस ऑफन यू कम टू सी सम केमिकल्स causing inflammation of the meninges, that is said to be the chemical meningitis. Well, now onwards beta we talk about the acute pyogenic बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, उसके बाद वायरल मेनिंजाइटिस को डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, द कॉजेटिव एजेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनिंजाइटिस एज वाइज अगर देखें तो नियोनेट्स के अंदर बेटा इट इज़ द ई कोलाई एंड द ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोक्साई, एंड इन द उससे थोड़ा आगे जाएं एडोलिसेंस में और यंग एडल्ट्स के अंदर इट इज़ द निजेरिया मेनिंजाइटिस, एंड इन्फेंट्स के अंदर इट इज़ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, राइट। एंड एट एनी अदर एक्सट्रीम्स ऑफ द लाइफ, इन तीन के अलावा एट अदर एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड द लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, राइट। these are the microorganisms, these are the bacteria you have to keep in your mind. The clinical picture, the possible clinical picture if you develop the bacterial meningitis is number one the systemic signs of the infection. बॉडी में कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन होता है, जो जनरल साइंस आते हैं, फीवर, हेडेक, मलेस, वो तो होंगे, लेकिन साथ में जहाँ पे इन्फेक्शन मौजूद है मेनिंजीज में, उससे रिलेटेड भी साइंस आएंगे, लाइक द meningeal irritation and the neurologic complaints like the headache, फोटोफोबिया, उसके अलावा इरिटेबिलिटी, क्लाउडिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्शियसनेस क्लाउडी होती है, फीकी फीकी कम कम सी होने लगती है, एंड द स्टिफनेस ऑफ द नेक, ठीक है। सो जनरल साइंस ऑफ इन्फेक्शन जैसे कि फीवर, मलेस, हेडेक, उसके अलावा meningeal irritation और साथ में neurologic complaints, right? I hope you are clear with this, and I don't think it is difficult to write. These are very precise notes. You can just keep this thing in your mind. You are done with the causative agents. You keep this in your mind. You are clear with the clinical presentation of the patient, okay? If you perform the spinal tap and you take the CSF sample out, what will you see? In case of acute pyogenic bacterial meningitis, the CSF findings will be, the CSF will be very much cloudy or frankly purulent, because it is a bacterial infection, so it will be purulent. Some pus will be present in the CSF. You will find at least 90,000 neutrophils per cubic meter of the CSF. It's a sign of acute inflammation. Increased protein concentration in the CSF, and the glucose content is relatively reduced. The bacteria can be seen inside the CSF which you took out, and the bacteria can be seen on the smear or maybe culture. CSF culture करें, आपको उसके अंदर बैक्टीरिया दिख जाएगा.
How easy it is, but I have actually divided this in parts. Causative agents, there you go. General presentation, there we go. What will be the CSF findings? Here they are, right? And they are actually important. What are the possible complications of the acute pyogenic bacterial meningitis? If you keep this meningitis untreated, then what will happen is Waterhouse-Friedrich syndrome. Waterhouse-Friedrichsen syndrome होता है. What actually it is? It results from the meningitis associated septicemia. If you are suffering from acute pyogenic bacterial meningitis and if you keep it untreated, what will happen is the microorganism will get out from the meninges and they will be spreaded. They will be separated all over the body, right? Separated all over the body. That is the septicemia. And there will be the hemorrhagic infraction of the adrenal glands, number one association. Number two thing will be the cutaneous petechiae formation. Cutaneous petechiae formation. And this is most often seen with meningococcal meningitis and the pneumococcal meningitis. You understand what I'm trying to say, beta? The complication part. Let's recap. If today I am suffering from the acute pyogenic bacterial meningitis, especially by the meningococcal bacteria or the pneumococcal bacteria, what will happen if I keep it untreated? The bacteria will get out of my meninges and they will spread all over the body in my circulation. That is the septicemia. What other complaints will I come up with? Hemorrhagic infraction of the adrenal glands and their associated complications, and I will be presenting with the petechiae formation on my skin. So be careful if you have acute pyogenic bacterial meningitis. Okay, right. Okay, lastly, beta, it is the purulent meningitis in the immunocompromised individuals. Look, the acute pyogenic bacterial meningitis can occur in any individual. If you are immunocompromised or if you are not immunocompromised, healthy individual. But particularly if we talk about the immunocompromised individuals, then meningitis in immunocompromised individuals is caused particularly by what bacteria? Klebsiella and some anaerobic bacteria. If you are if you are having kind of old diabetes, if you are on post transplantation stage, or if you are suffering from HIV/AIDS, you are at risk of developing the meningitis, and the causative agent will likely be Klebsiella anaerobic bacteria, right? And in this case, the clinical course of the meningitis will be very much atypical. CSF findings will be the very much, uncharacteristic, right? In general, look, I am a 25-year-old male, not immunocompromised, healthy, good looking. If I develop acute pyogenic bacterial meningitis today, what will be my CSF findings? Cloudy CSF, purulent CSF, high neutrophil count, high proteins, low sugar, and bacteria will be there. But if let's suppose I am a 25-year-old male and suffering from HIV/AIDS, so I am immunocompromised, and if I develop the meningitis today, you think the CSF findings will be same like this? No. The CSF findings will be very much, non-typical. So this is what you have to keep in your mind, beta. Okay. So now after the acute bacterial meningitis, I don't think this can be easier than this, beta. This cannot be easier than this. Lastly comes the part of acute वायरल मेनिंजाइटिस को acute aseptic meningitis भी कहते हैं. देखिए, ये एक प्रॉपर टर्म नहीं है. मैं बताता हूँ क्या इसमें क्या होता है. If you are suffering from the meningitis, and you perform the CSF culture and you see there is no bacterial growth, but still you have meningitis, that is said to be the aseptic meningitis. You are suffering from meningitis, you took your CSF out and studied that CSF and you see there is no bacteria, then that type of meningitis is said to be aseptic, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता नहीं है, जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है. फिर वो वायरल भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, बट एटलीस्ट बैक्टीरिया नहीं है. दैट इज सेड टू बी द एसेप्टिक. सो लुक हियर,
एब्सेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय बैक्टीरियल कल्चर इन पेशेंट विद द मेनिंजाइटिस। एक पेशेंट है जिसको मेनिंजाइटिस है, आपने उसका CSF कल्चर किया, बैक्टीरिया नहीं मिला, उसको एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कहेंगे। ठीक है, फिर अगर बैक्टीरिया नहीं है तो फिर कौन होगा कॉजेटिव एजेंट? मोस्टली फिर वायरस होता है। ठीक है, 80% केसेस में वायरल इटियोलॉजी ही होती है। ठीक है, और वो भी इंटेरो वायरस होता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से या ओके। The CSF findings, what do you think beta compared to the previous variety? The CSF findings in the aseptic meningitis, um, if this is not the bacterial meningitis, then obviously bacterial नहीं है, viral है, तो यहाँ पे neutrophils नहीं, there will be lymphocytes, lymphocytic pleocytosis. प्रोटीन एलिवेशन कंपेयर टू द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस यहाँ पे मॉडरेट होगी। ग्लूकोज कंटेंट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में तो कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नियरली नॉर्मल होता है। ठीक है बेटा, व्हाट अबाउट द कोर्स ऑफ दिस डिजीज़? वायरल मेनिंजाइटिस इज सेल्फ लिमिटेड डिजीज़, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चाहिए होता है, क्योंकि वायरस अपना स्पैन पूरा करके वैसे भी चला जाता है, तो इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती। ठीक है बेटा, मैंने कुछ अच्छा तो फ्रेम नहीं लिया, लेकिन आई होप इट इज़ विजिबल स्टिल। ओके, yeah. So lastly, aseptic meningitis, aseptic meningitis like picture also develops subsequent to the rupture of epidermoid cyst into the subarachnoid space, or number 2, the chemical meningitis. What I'm trying to put into your mind is, you are suffering from meningitis, you took your CSF out, there is no bacterial growth, that is said to be the aseptic meningitis. Then what is the underlying cause behind the meningitis? Most commonly virus, and most commonly enterovirus. Okay, what is the difference of the CSF finding between the bacterial and the viral meningitis? In case of bacteria, the neutrophil count was high, here the lymphocytes are high, proteins were high there, proteins are moderate there, glucose was really low here there, and glucose is not really low here. Okay, and this is a self-limited disease. The important thing is, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जैसी प्रेजेंटेशन दूसरी और कौन सी कंडीशन है जिनमें देखने को मिल सकती है? नंबर 1, रप्चर ऑफ द एपिडर्मॉइड सिस्ट। इफ़ यू डेवलप द एपिडर्मॉइड सिस्ट इन योर ब्रेन, अगर वो एक बार रप्चर हो जाए तो बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन आती है जैसी एसेप्टिक मेनिंजाइटिस की होती है, जैसे कि लिम्फोसाइट का हाई होना, प्रोटीन एलिवेशन मॉडरेट होना, ग्लूकोज कंटेंट नॉर्मल होना। उसके अलावा केमिकल मेनिंजाइटिस, इसमें भी यही होता है, शुगर कंटेंट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, राइट, द प्रोटीन लेवल्स आर मॉडरेटली हाई, बट द डिफरेंस इज ऑफ neutrophils. In this case, in chemical meningitis, neutrophils are little high. In case of aseptic meningitis, there are lymphocytes. That's it. Okay. So, yeah. इसके बाद बेटा we'll be discussing the morphology part. Okay. The morphology of acute meningitis, bacterial and viral.